Okay, let's open the books. What page number? 27. Fish and chips today. 14. Are the sentences true or false? Correct the false ones using much, many, or a lot of. There aren't many fish and chip shops in Britain. Yes, there are. There are a lot of fish and chip shops in Britain. They make a lot of money. They do. Joseph's family was poor. Yes, they Yes, were. they are. Yes, They were poor. they were. No, Faizan, you are not learning the English style. You are not paying attention. Yes, they were. This is how we agree with the statement, right? Joseph's Yeah, family was poor. Yes, they were. Or yes, they it were. was. Yes, it was. Either way, doesn't matter. Yes, it was. Or yes, they were. 4. Joseph sold a lot of fish and chips. Yes, he did. Fish and chips were expensive. No, they Wrong aren't. response. Fish and chips were expensive. No, they were not. Use much, many, or a lot of when you're making the correction, right? Now, go ahead. No, they won. Very good. Very good. Both of you have done a good job. They didn't cost much. They didn't cost much. No, they didn't cost much. They weren't expensive, right? No, they weren't. They didn't cost much. Okay. Okay. Some people in the north of England. Hey, listen, guys. Faizan, Sahil, Shahid, Tawfiq, and Guria, and everybody else, sort of. I am Yes, sir. saying this. Sometimes what happens, exercises go useless because the students are not as attentive. Here, the statement is fish and chips were expensive. So natural reaction, if we know the story, we all know fish and chips were not expensive. So we will say, no, they were not. Right? And then the instruction says, correct the false ones using much, many, or a lot of. We'll say, no, they weren't. They didn't cost much money. Right? Okay. Some people in the north of England don't believe Joseph Mullin's story. Yeah, right. There are lots of people who don't believe Joseph Mullin's story in the north of England, right? Very good. This is not true, okay? Because the statement says some people in the north of England don't believe Joseph Mullin's story. The fact is a lot of people don't A believe lot of Joseph people Mullin's in the story, north of England. right? 7. Anybody who wants to work on their past simple and the present perfect, please watch today's recording of 4:30 batch and yesterday's recording of 4:30 batch. Today's recording matters more. 7. Today, pizza and burgers are much more popular than fish and chips. Yes. Yeah, it is. It is a much more popular than Not it fish is. and We Today, will say yes, pizza they and are. burger. Yes, they are. chips. We will stay Oh, with they yes, are, they not are. it. Yes, Pizza they and are. burgers. Pizza and burgers. Okay. Come again. First, watch some videos of British fish and chips, how they make it. Okay.
Yes, but you have to learn what spices they use. Indian taste buds are different. We have different taste. We like different things. We have different preferences. Biharis in particular. Biharis like lots of garlic, ginger in most of their meals. Exercise 15. Join the lines about Britain's favorite meal with a and the or no article. The Belgians invented chips. Belgians invented chips. 2. Joseph Mullin was Joseph Malin was a 13 years old boy. 13-year-old boy. 13-year-old boy. Next. He came from He came from Paris. He comes from Paris. he The came Paris. from he came from He came from the the Paris. London. Ask him. He is saying he will explain. Yeah, it's the east end of London. The east end of London. Why is it in London? In London. And now just observe his body language now. He will do this and he will look absolutely lost. He will not be able to tell us what was the problem, what he thought. And he will not expect that, okay, there can be a simple solution to this confusion. What is that? Grow up. Tell me, what's the problem? Hey, Nikhil. That's why. Yes? हाँ, तो क्यों बोल रहे हो द लंदन क्यों बोल रहे हो? उसने पूछा बोल रहा है तो शी इज आस्किंग द लंदन क्यों बोल रहे हो? तो जवाब देगा ना. प्लीज आंसर. द लंदन क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू सेइंग द लंदन? अच्छा, तो कहाँ पढ़े हम लोग कुछ ऐसा? हाँ 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 हाँ, तो बताइए ना. East end of London. हाँ, तो क्या? And in the chart itself, look at the second last line at the bottom. Fish and chip shop in here. Take a look at this part. I mean, अच्छा ये बताओ. अच्छा ठीक है. यहाँ क्या लिखा है बच्चे? यहाँ क्या लिखा है? Of England. Okay. अच्छा, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? Okay. यहाँ क्या लिखा है? ये सारा चीज तुम इग्नोर करोगे और वो देखोगे कि वहां पे ईस्ट एंड ऑफ लंदन लिखा है. कमाल हो तुम. In Paris. That is the particular place. That's why we आगे the देखना. east end of London. हाँ, ईस्ट एंड. ओके, द ईस्ट एंड. द ईस्ट एंड. end. द ईस्ट एंड. ओके, यहाँ देखना, यहाँ भी देखना, यहाँ देखना. बट नहीं, इसको तो द ईस्ट एंड ऑफ लंदन दिखा तो द लंदन बोलना होगा. 6 जगह इसी पेज में we have 6 examples where we are not using articles, and there is one use where we are using article with the east end. Yes, please. The east end, but you are putting that the with London. How you convince yourself for such a thing? That's very, that's remarkable. I don't know. I will have to be born again to understand you. In this life, it's not possible for me. I mean, I make mistakes too. When I learn, Italian, I make silly mistakes. But people understand why those mistakes happen. Can anybody explain this? He does not make mistakes. He tries to be extra correct. You don't make mistakes. You try to be extra correct.
You have no idea what actually is done. Okay. He came from, we are reading the sentences. 15, exercise 15. Number 3. He came from, everybody said London. He came from London. This guy said he came from the London. Okay. He said he came from the London. And then everybody is curious. Why are you saying the London? कोई नई इंग्लिश सीख ली हम लोगों ने आजकल में 1-2 दिन में, ठीक है? तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो ना, उस चैप्टर का पूरा ऊपर नीचे कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, उसी समय करेंगे जब पढ़ाओगे उसी समय। एक्स्ट्रा वो हो जाता है। तो द लंदन, आज तक तूने लंदन, मुंबई, दिल्ली सब बोला है, राइट? कभी द नहीं बोला। आज जब आर्टिकल्स का चैप्टर चला था, द लंदन नया सीख लिया बच्चा। और जब पूछा गया क्यों क्यों क्यों, तो बहुत मेहनत करने के बाद उसने ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया है। कहाँ गया? ये देखो यहाँ, द ईस्ट एंड ऑफ लंदन। हाँ, लंदन में तो द नहीं लगा था, द लगा कहाँ है? द ईस्ट, द ईस्ट एंड, द ईस्ट एंड, राइट? उसको वहां से द लेके आ गया कहाँ पे? लंदन में। और सारे लंदन के एग्जाम्पल्स, सारे प्लेसेस के एग्जाम्पल छोड़ दिए। देखो ना यहाँ पे, ये देखो, फ्रॉम यॉर्कशर, फ्रॉम यॉर्कशर। और क्या देखना, ये यहाँ देखना, इन पेरिस फ्रांस, ओके? और देखना, इन ब्रिटेन, ओके, ऑफ इंग्लैंड। It's normal, it's obvious, something we have been doing all along. There are a few countries like the UK, the US, the UAE, you know, we use the before. They are a group of, you know, they are like a, they're like a union or something. So we have the with them, okay? The UK, the US, the Philippines, okay? But today he said the London. Trust me, he didn't make a mistake. He was being, you know, proud that he is getting it right, not everybody else. I think it was supposed to impress you. No. He just wanted to be, I'm extra correct today. हो जाता है। मैंने कहा ना कि समझ तो नहीं पाऊंगा उसके दिमाग के बाद इस जन्म में, अगले जन्म में। द लंदन। अच्छा, तुम बता सकते हो कैसे हुआ ये सारा खेल, स्टेप बाय स्टेप? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तुम पढ़ रहे होगे तो डायरेक्ट वो लाइन तुम्हारे दिमाग में आएगा। पहले तो ये यहाँ मैच करवा रहे होगे, तुम मैच करवाए होगे। यहाँ तो कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ दिखा था, पूछना था। हाँ, और ये यहाँ पर ये दोबारा आगे पढ़ते समय ये भी दिखा होगा, फिर भी तुमको लगा नहीं द लंदन। ये इग्नोर करा तुमने, ये इग्नोर करा एक्सरसाइज के बाद, because you convinced yourself that you should say the London. I accept that. You convinced yourself he came from the London. Okay, somehow, sometimes we convince ourselves with the wrong things. But then you. Like you always want London. So why can't we use आप करें सर, मैं आपको 100 रुपए दूंगा अगर आप लगातार द लंदन बोले 10-15 दिन तक, ठीक है? I will give you 100 रुपए, 100 rupees, पक्का दूंगा। हाँ 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 हाँ, of course, it's a logical perspective. We use the article before the things or We do not use the article the before proper nouns. That's the first lesson. get it. Okay. Moving on. तो ये लाइन पढ़ने के बाद तुमने फिर वापस उसको जाके सोचा नहीं, ये मुझे अजीब लग रहा है। ये तो कर सकते थे कि ये कहाँ किसके साथ गया? फिश एंड चिप शॉप इन लंदन। Yeah, Harry Ramsden opened, right? Opened a fish and chip shop in London. So how did you, please Anna, turn on the lights and please use the article there with London. Okay, I'll give you 100 rupees. Adnan. Yeah, fine. Yes, good. Thank you. That's enough. Yeah, that's enough. Okay. My offer is still open. Okay. Yes. Adnan, you have to use the. No, sir. That's not fair. You have to use the London everywhere. Even the student can make mistake in front of the teacher.
No, no, no. I want you to use the London everywhere. And anybody who objects to you, give this logic. Okay. Object. But you got it. That your logic will be Mukarram. Okay, thank you, Mukarram. I just first rule, okay. And another thing, let's understand some basic things that I might have told you before. In English, we do not use singular countable nouns alone. We need something, right? These articles convey message that when you say a or an, which are indefinite, you mean to say any. It doesn't matter which. You are mentioning it for the first time. So the listener doesn't know. When the speaker mentions a or an, the listener doesn't know which. Okay? It generalizes. It generalizes. A and N generalize. And the particularizes. It says a specific one. London is a proper noun. Now I'll tell you. I'll tell you what you're thinking was not wrong at all. Logically, if you use a common noun, city, just say city. City is a common noun. London is a proper noun. So the city means the one that we know. Suppose I left the city. It means the city that you know. That if you didn't know, then I would not say I left the city. Okay? Because you know which city I'm talking about, I will say the listener, right? Exactly. Then the speaker uses the to convey wahi, aise wala. Got it? So let's do the exercise. He came from? Are you convinced? Now it is coming in my mind. It came from the He sold fish and chips to increase To increase the the family family income. the family income. Of course, the income of the family income. Okay. It was It was an incredible success. an incredible success. Incredible is unbelievable. So impressive. Incredible. Right. Charles Dickens wrote about Fish and chips in his books. yeah. No. Charles Dickens wrote about fish and chips in his book. I was like, what? when I was everybody got to say Yeah, I mean, yes, no, yeah. Charles Dickens wrote about. Fish and chips. You think? Tell me. Don't ask me. First of all, I want to know from you. Charles Dickens wrote about. बोलने दो उसको ना. बोल लो सरिता. Charles Dickens wrote about. एक के साथ वो पूरा सेंटेंस बोलेगी तब तो उसका एहसास होगा. आप जब गलत आर्टिकल बोलोगे ना, फील आएगी कि गलत है. आप डोंट वरी, यही सही तरीका है आर्टिकल्स का, फील आने चाहिए. ओके, हाँ, फिर से बोलना सरिता. Okay, now try to say it with A. Charles Dickens wrote about a fish and chips. Sounds good? Not at all? Yeah, that's how it is. And when we are reading here, then it looks like I think that the should go there. Okay, Charles Dickens wrote about the fish and chips in his book. Yeah, because we were discussing about that, so we are referring that. Charles Dickens wrote about fish and chips in his book. Charles Dickens wrote about the fish and chips in his book. That thing that we can use the same in the book. Let me tell you the answer, because the question you asked, whether we should use the fish and chips or not here. We should not use the fish and chips. I'll tell you why. Fish and chips is the name of the recipe, fish and chips, okay? So when you say the fish and chips, you are particularizing that fish and chip, okay?
any particular fish and chips. Then you will say, for example, you go to a restaurant and they offer you the menu, and the menu has chicken passet, chicken chili, chow mein, hakka chow mein. These things are written there. There's no the written there. Okay. Now, is this the only restaurant selling these things? There are. No. Okay. So when you order, you say, I want the hakka chow mein. I want the chicken chili. We will not say, but what I am thinking. Like, just hold on. My explanation is not over. So you are saying, I want the chicken chili. I want the chicken passet. This restaurants, the chicken passet that you sell. I want the chicken 65. Yeah, the chicken 65 here means the chicken 65 you have on your menu, the one that you make. The one that you have written, I want that. So when the customer says, I want the chicken chili, the waiter knows which chicken chili. The chicken chili mentioned here, obviously. Not much. Recipe can be the process as well, the process. Dish is the final thing. So recipe can be used for the word dish as well, but recipe is the process, okay? The ingredients and then the recipe. Recipe is the process. So Nikhil, when we say the, then we are particularizing that item. So the fish and chips means, again, put the fish and chips there as well. So the customer says, I would like to try the fish and chips. So a specific fish and chips from this restaurant, when you are saying in the restaurant, right? But if you're talking about fish and chips in general, then next. Yes. Sir, Wait for a second, just a second, Faizan. I will come back to you. I will come back to you, Faizan. Okay, I will come back to you, Faizan. Hold on. Yeah. Just I thought like Charles Dickens wrote about the fish and chips. The how it all began about that they written. That's why I No, thought he like, mentioned the dish. okay. In his books, he talked Okay. about fish and chips too. Okay, I thought like in early ages, like how it spread or something. No. Then It happened because of your. Do you know who Charles Dickens was? He was a Victorian novelist. okay. He was a Victorian. Novel. So Charles Dickens was very famous. He mocked the royalty, the rich people, and he wrote stories about the poor people, their struggles. And that's why fish and chips came up in his stories, right? Okay, So he fine. mentioned fish and chips in his story. Then fine. Got it? Yeah, got it. Yes, Faizan. सर थोड़ी देर पहले आप बोले थे सर कि द लंदन नहीं होगा और द पेरिस नहीं होगा क्योंकि ये सिटी है What have your pencil? Go ahead, continue. Let's see where you're going. मतलब सर जो कॉमन नाउन होता है उसमें अगर स्पेसिफिक किसी चीज के लिए अगर हम बात करते हैं तब हम द लगाते हैं, नहीं तो फिर कॉमन नाउन में हम द नहीं लगाते हैं, जैसे ये फिश एंड चिप्स अगर ये एक सेकंड। बहुत सारी चीजें आपने ऊपर नीचे कर दी हैं, एक दो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट कॉमन नाउन्स आर? कॉमन नाउन्स मींस सर जो हर कोई जानता हो। अच्छा no in a way he's right. Common noun, common word लिखा है तो common नहीं है। Common noun means a group, a class. Yep. Okay, not individual. Not Individual. when we say river, any river is a common noun. A student. Okay, student is teacher, school, Country. doctor, book. These are all common nouns. Common. But when you mention a particular one, a specific one, Vinay Shankar Soni, now this is a proper noun. You know, Adnan, proper noun. City is a common noun, but Bihar Sharif or London is a proper noun. Proper Yes. noun. So first of all, Faizan, I hope you cleared your understanding of the difference कॉमन between नाउन, common noun कॉमन नाउन and proper इज noun. अ ग्रुप ऑफ People. Is a class. Is a class. Common noun is a class. Yes.
Okay, now I recall something. I just want to make sure that it is right or it is just a story. That is this the Rajendra Prasad? The is the The Rajendra Prasad. Rajendra Prasad is the only person that is ना like ना before that. ना आई एम ना नॉट डन सर। ये बहुत परेशानी करने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं एकदम पेशेंटली आंसर करूंगा आप सब लोग के। हाँ ओके फाइन। No, 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 no. The Karan Luthra so. हाँ 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 सही बोला। नहीं आप गलत हैं यहाँ पे, आप अभी शांत रहना, आप गलत बोल गए। Sir, I am accepting that I am wrong. हाँ। But sir, I heard this in a TV program. That was not the name of the program. हाँ In that. तो फिर आपको आगे जवाब दे देता हूँ। पहले ही सब लोग को जवाब मिल जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले द का कहानी बहुत कॉमन कहानी है, एंड एवरी स्टूडेंट नीड्स टू नो इट। Yes. Okay, we will come to that. Yes, let Faizan finish with his confusions, and then I will address yours. Yeah. Faizan. एंड सर जो मतलब जाना हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे आपने बोला कि पेरिस में और लंदन में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा, इस हम लोग को एग्जांपल दिखलाया आप यहाँ पे द नहीं है, क्योंकि ये क्या है सर ये? कुछ भी रहे नहीं, कुछ आपको वो नहीं जानना है, क्योंकि नहीं जानना। आप ऑब्जर्व कर सकते ना, इन लंदन, इन पेरिस। इस एग्जांपल से क्या पता चला? बट सर दो एग्जांपल से इन लेकिन मुंबई सर बोला, दूसरे क्लास में बोले थे आपकी जो स्पेस रहता है, जगह रहता है, उसके पहले द लगता है। कब बोला मैंने? रिकॉर्डिंग देखिए। मुझे पे चिट फाड़ रहे हैं, कह रहे आप बोले। नहीं सर, मेरे को ऐसा याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। No, Faizan, you misunderstood. It's very common. A lot of people misunderstand rules. That's why rules are not important. Examples are important. You observe the rule. You decipher the rule from the examples. Yes. Don't wait for the teacher to spoon feed the rules to you. You look at the examples. भाई मैंने तुम्हें कोई rules नहीं दिए, मैंने कहा ये सारे देखे तुम, in London, in Paris, in Britain, इससे क्या सीखा? ये तुम जान देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। You don't have to ask, listen to this rule from me, right? I don't have to spell it out to you. I'll say the same thing to Faizan. जो चीज सामने है उससे आप एहसास करिए क्या आप बोलना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बड़े मुश्किल में, मैं मेरे क्लास पढ़ाता हूँ, वहां पैटर्न नहीं देखते लोग। मैं 3 दिन से एक चीज पढ़ा रहा हूँ, पता है क्या? डोंट डू समथिंग। कोई भी वर्ब लगा के, जैसे Okay, don't anything. कोई भी वर्ब, हम्म। तो सारा 15 सेंटेंस का प्रैक्टिस हो जाता है, आधे घंटे 45 मिनट। उसके बाद कोई बोलता है डोंट बैड फ्रेंड्स। Oh, okay. अब पूछो कि मुझे कैसा लगेगा उस समय, यार तुमने इतनी देर प्रैक्टिस करी, क्या गौर किया यार? तो आई नो द रीजन। उन लोगों के दिमाग में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ही नहीं। वर्ड्स है, बस वर्ड्स होते हैं। नहीं तो ये तो बेसिक आइडिया है। अगर एक अडल्ट हो और नहीं समझते व्हाट वर्ब्स आर, व्हाट नाउन्स आर, व्हाट एडजेक्टिव्स आर। So now I remember. Today you will give me that elementary wala book. Okay, so again, like I said, उससे कुछ नहीं हो जाएगा, वो उससे कुछ से नहीं होगा होने नहीं, वाला है। that's मैं like- क्लियर कर दूं, उससे नहीं होता। हम्म। बुक विल नॉट टीच यू नाउन वर्ब Yes, एडजेक्टिव्स yes. एट ऑल। और ये नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बात करता हूँ कि व्हाट आर वर्ब्स, व्हाट आर नाउन्स, व्हाट आर एडजेक्टिव्स। यू नीड टू हैव अ कॉन्सेप्ट इनसाइड, यू नीड टू हैव अ फील फॉर दैट। ये वर्ड सुन के आपको मीनिंग अगर पता है तो आपको पता चलना चाहिए कि नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है Yes, sir. इन अ सेंटेंस। अगर नहीं पता चलता है तो एज एन एडल्ट यू आर गोइंग टू बी इन डीप हॉट वाटर, you are going to be in so many problems in all sorts of ways. You know, it's going to be next to impossible for you to learn a language as an adult. And If you, what we know, sir. huh? We know about Of course, of course. I'm not asking you to do anything more. Just know. For example, when I say I ran hard, so ran is a verb everybody should understand. Yes, sir. I gave him a book. A book is a noun everybody should know. Yes, sir. But the problem is there. Which word? What did you say? What is? The problem. Listen carefully to what she's saying. Say it again. Problem. Listen carefully. Put your ears to her, closer to her. Please say it out loud. Yes. I can't believe this is the second time. Please say it out loud. वो जो बोल रही है वो सुनो, क्या बोल रही है वो? जरा जोर से बोलिए। The problem मैंने बोला था start. प्रॉब्लम, Problem. ग बोलती हैं वो। और मुझे आपकी याद आ गई, आपके भैया की।
उनको मैंने बहुत एम्बैरेस कराया, पता है क्यों? क्योंकि ये तो अभी जुड़ी है ना मेरे से कुछ समय, 2 महीने पहले। आपके भैया साल 1.5 साल पढ़ चुके थे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरे मुंह से क्या सुनाई पड़ता है? प्रॉब्लम, अच्छा, स्पेलिंग क्या होती है मेरे दोस्त? PROBLM, और पढ़ते क्या है? प्रॉब्लम, और तुम क्या बोल रही बोली जा रही थी? प्रॉब्लम। कहाँ पैदा हुआ ये कंफ्यूजन? Listen, no. मैं बता रहा हूँ बिटर ट्रूथ। ओके, मुझे प्लीज हेट मत करना सच बोलने के लिए। लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस। आप स्पेलिंग लिखते हो क्या और आप पढ़ते क्या हो? कभी कभी नहीं सोचा कि मैंने ये दोनों मिलाए, कभी नहीं। क्यों? प्रॉब्लम, आप अपने आप को नहीं सुनते हैं। प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम बोलते हैं और अपने आप को नहीं सुनते कि मेरी स्पेलिंग क्या है भाई। प्रॉब्लम। अच्छा, मैं फिर से पूछता हूं, अगर आप PROBLEM जानती हैं और जो कि जानती हैं, तो आप उसको प्रॉब्लम बोले जा रही 3 बार। मैंने आपको कहा गौर से सुनिए, आप सुन रहे थे? हाँ मैं सुनता क्या बोल रही थी वो? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। मैं यहां से महसूस कर पाया। एक्चुअली मैं महसूस ही नहीं कर पाया इस वजह से, क्योंकि मुझे ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये गलत चीज है कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आपको बगल से आपको आवाज नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम है। मैं कंफ्यूज हो गया सर, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ when I first time heard from his brother problem, I was like what? प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये जानना है कि ये दोनों को आपने कभी अपने दिमाग में जगह दी है एक साथ? तभी दिए सर, जैसे शूज, मेरे जूते जो होते हैं उसकी स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज है। शूज, हाँ, शूज, अच्छा। करियर। नहीं 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 नहीं, बात दूसरी तरफ जा रही है। नहीं, बहुत जब आप बोलते हो प्रॉब्लम, लिखते हो प्रॉब्लम बी के साथ, हाँ तो मतलब अब ये जब तो क्लियर है ना, प्रॉब्लम लिख ही रहे हैं वो। ये मुझे क्लियर है कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो वर्ड मैं लिख रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वो डिफरेंस करता है बहुत सारे वर्ड्स के साथ। ये 1-2 वर्ड्स नहीं है, सब बहुत सारे वर्ड्स। कॉन्सोनेंट कैसे बदल जाएगा और क्यों बदल जाएगा? वही चीज मैं बहुत बार इम्प्रूव करने की कैसे कैसे? नहीं, ये आया कहाँ से? ये प्रॉब्लम कहाँ से आया? आपने जब देखा होगा किसी वर्ड को PROBLEM, तो आपके दिमाग में ग का आवाज कहाँ से आ गई? अब ये चीज मुझे भी नहीं मतलब पता किसी का सुन सुन मैं के बताऊं कैसे हुआ ये? ये मेरा छोटा सा वो जो भतीजा है ना, माय वाइफ्स सिस्टर सन, ही से सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ओके। ओके। तो उसने सुना है सब्सक्राइब, हाँ तो उसको जो समझ में आया उसने पकड़ लिया। हाँ तो बच्ची ने सुना प्रॉब्लम, इसके दिमाग में जो उस समय उसने पकड़ लिया प्रॉब्लम और फिर और रह गई never इसके साथ। left। लेकिन एक फर्क है, उस बच्चे को सब्सक्रिप्शन की स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। तुम्हें प्रॉब्लम की स्पेलिंग पता है, फिर कैसे तुम प्रॉब्लम बोलती रह गई? ये मुझे अभी तक नहीं पता है। मैंने तुम्हारे भाई का भी दिमाग खूब खाया था यही पूछ के, यही सवाल कि तुम्हें पता है स्पेलिंग। उसने सही स्पेलिंग बता दी, PROBLEM। बट दो लोग जो अलग अलग जगह से है वो सेम ही मिस्टेक कैसे किए हो, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब प्रॉब्लम। I can tell you why. There are lots of teachers who are pronouncing problem. ओके। So the students are listening to the bad pronunciation, learning that. The question that you asked was very valid. And these two people are not the only two people who are saying problem. My wife's sister says problem. Yes. They hear the words, they perceive it in a certain way, and they start saying it. Just like my nephew says सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब, इतना लोग सब्सक्राइब कर लिया। मैंने आज ही उसको बोला बेटा सब्सक्राइब, तो थोड़ा मेहनत किया उससे, फिर वापस सब्सक्राइब पे चला गया, ओल्ड हैबिट, ओके। हाँ तो वो बच्चे स्पेलिंग नहीं जानता। आप प्रॉब्लम में कोई परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज द स्पेलिंग इज PROBLEM। यस। तो आप जब बोलते हैं प्रॉब्लम और लिखते भी है, कई बार आपने लिखा होगा बोलते समय, तो आप कैसे उस दोनों को एडजस्ट किए होंगे अपने दिमाग में? हाँ, क्योंकि if we are reading it problem then we will use G instead of B even when writing। इसका मतलब फोकस नहीं है, इसलिए मैंने लेजी वर्ड यूज कर दिया है ना ऑलरेडी। मैं ये बोल रहा हूँ लेजी कि आप गौर ही नहीं कर रहे हो क्या आप बोल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। एक क्लास की और बात बता दूं। I just want to share another experience today I had. There was a sentence, we read all the time. We love books, so we read all the time. Our passion is books, so we read all the time. तो एक बच्चा था, उसने तेजी से इस सेंटेंस को पढ़ दिया, सामने लिखा था। 5 मिनट बाद मैंने कहा कि मेरा दोस्त हर समय सोता है, उसको नहीं पता क्या लिखना है। वो ऑल द टाइम जो पढ़ा ना, उसको कुछ नहीं सोचा वो। तो हम लोग सोचना कब शुरू करेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है, सोचेंगे कब उस पे हम लोग? सवाल ये। उसने फटाक से पढ़ा जो लिखा था सामने किताब पे, आवर पैशन इज बुक्स सो वी रीड ऑल द टाइम। तो वो पढ़ा, उसके बाद समझा नहीं कि क्या पढ़े, बोला हो गया। ने कहा अच्छा,
5 मिनट बाद मैंने कहा एक सेंटेंस लिखो तो इंग्लिश में, मेरा दोस्त हर समय सोता है, वो ऑल द टाइम नहीं यूज कर पाया। एक्चुअली 70-80% स्टूडेंट्स couldn't use it. They all read that sentence. कोई चीज आपके सामने से गुजरे तो आपको उसको ऑब्जर्व, एक्नॉलेज करोगे कि आया था आपके आंख के सामने, कि नहीं करोगे एक्नॉलेज? खास कर जब आप बैठे हो सबको गिनने के लिए, सीखने के लिए, आप कहते हैं ना हम सीखने बैठे इंग्लिश, तो आपके सामने जो वर्ड्स आएंगे उसको आप एक्नॉलेज करोगे, जाने दोगे? तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि 70-80% स्टूडेंट्स में से कोई 10-20% स्टूडेंट्स गॉट इट राइट, द रेस्ट ऑफ देम couldn't. It was a class of 30-40 students, 3-4 got it right, the rest of them couldn't. They all wrote always, usually, every time, all these things, but nobody wrote all the time. although everybody read that sentence. Why? They were too fast with it, like The only answer is they don't think about what they're reading, what they're saying, what they're listening. They just don't think. And someone who thinks, they make so much progress in this class, I can't tell you. They become exceptional because there's so much to think about. ऐसा समझ लो ना कि खाना पचाना है, राइट? और खूब मिल रहा है खाने को, और आपके अंदर क्षमता है पचाए जाने की, तो आप तो बम बम पचाए जा रहे हैं, ताकत बनाए जा रहे हैं, और जिससे पच ही नहीं रहा वो खा रहा है, फेंके जा रहा है, because they can't digest. It's waste. It's a waste. I don't believe here Sarita is a slow learner at all. इसका स्लो लर्निंग से क्या लेना देना है? प्रॉब्लम और प्रॉब्लम लिखने का, बताना, बोलने का, इसका क्या लेना देना It's है? just और habit. वहाँ ऑल द टाइम का स्लो लर्निंग से क्या लेना देना? जब उसने समय ही नहीं दिया। स्लो लर्नर किसको बोलते हैं? जब कोई कोशिश करे और स्लो रहे। जब ध्यान ही नहीं दिया तो उसने स्लो लर्नर फास्ट लर्नर कहाँ से हुए? जबरदस्ती ना। योर एनालिसिस, इट्स गुड दैट यू आर नॉट अ टीचर. It's good that you are not a teacher. I thought you your again making analysis, the your same diagnosis is so wrong all the time. No, don't be. Do anything, but don't be a teacher, please. Slow learners. The student did not pay any attention because they are not in the habit of. मैं बताऊं तुम लोगों की प्रॉब्लम, एक चीज बताऊंगा. तुम्हारे साथ क्या है कि अगर फेमिलियर वर्ड्स है ना तो सवाल ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में कुछ. तुम अगर कोई सेंटेंस पढ़े हो जिसमें सारे वर्ड्स क्या होने चाहिए? Familiar. तुम पहले पढ़ चुके हो, उसकी हिंदी जानते हो, फिर तुम कुछ नहीं पूछोगे, चाहे तुमको पल्ले कुछ ना पड़े, तुम Right. कुछ नहीं पूछोगे. और एक ऐसा सेंटेंस पढ़ो जिसमें कोई अनफेमिलियर वर्ड आ जाए, भले ही पूरी तरह से मीनिंग ऑब्वियस है, फिर भी तुम पूछोगे. ये हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो अब मीनिंग पे ध्यान नहीं देते कि अच्छा मीनिंग तो निकल के आ रहा है ऑब्वियस से, तो क्यों बोले कुछ और. जैसे कई लड़कों को हम सिखाते हैं व्हाट टाइम, ओके, या व्हाट कलर, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको पूछो ना कितने बजे, तो वो कितने का सोचने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है उन्होंने? What time? तो वो व्हाट नहीं पूछते, कितने का इंग्लिश क्या होगा सर, कितने बजे, ऐसे हो जाता है. क्यों? उस व्हाट टाइम को अप्रिशिएट नहीं करे, को किस पर्पस के लिए यूज किया आपने इंग्लिश में. जैसे ऑल द टाइम जो फ्रेज आया था, वी रीड ऑल द टाइम, उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं कि हम लोग हर समय पढ़ते हैं, तो बाद में बोल देते हैं मेरा दोस्त हर समय सोता है, माय फ्रेंड Sleeps all the टाइम. मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, मेरा दोस्त हर समय टीवी देखता है, माय फ्रेंड वॉचेस टीवी, लेकिन ऑल द टाइम नहीं निकला 3-4 लोगों को छोड़कर किसी के मुंह से. Yes, absolutely. Laziness. No interest in acknowledging why you are here, to learn. Observe. Yes, text में, पूरे text में there are so many things to learn for you, for him, for you, for everybody. In this Charles Dickens text, this Fish and fries. text, Fish and chips. there's so much to learn. But are you willing to spend so much time? Yes. Hallelujah. सर It's No, not it's a word. not It's a bad. It's religious yeah. thing to Hello. say. For all right? Christian. Praise. Yeah. I want to know the meaning. I'm just saying that it is praise to God. Praise to Lord. I thought we can use it when we feel like very happy or something. हेलो सर. Your Christians will be angry with you. Yes, Faizan. सर तो मैं If वही पूछ रहा somebody था सर कि says, "Ya Allah, द inshallah" as one word, then how are you gonna feel? Similarly, yes, Faizan. वही मैं पूछ रहा था सर कि जो द वाला कंसेप्ट है सर, वो मुझे एक तरफ तो क्लियर है, बट कहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है
जैसे मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बोले जो कि मैं भी जान रहा हूँ और जिसको मैं बोल रहा हूँ उस चीज के बारे में, उसको भी पता है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तो द लगा लगा सकते हैं। कैसे एग्जांपल लेकिन दीजिए जैसे जो आपको पता है। जैसे जहाँ आप अभी पढ़ाते हो, वहाँ के स्टूडेंट अगर मुझे कहीं पे मिलते हैं, मैं भी कहीं पे मिलता हूँ, और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि यू नो इट्स टाइम फॉर क्लास, आई एम गोइंग टू द क्लास, आई एम गोइंग टू द इंग्लिश क्लास। तो उस वेरी बंदे गुड। को मैं बोल रहा हूँ जो कि बंदे उसी क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि द इंग्लिश क्लास बोल रहा है, बट ये उसी थोड़ा इंग्लिश क्लास ज्यादा में जा आप रहा है। सोच गए, आप थोड़ा ज्यादा सोच गए। ये रीजन आप मत सोचो क्यों पता है वो वहां का बंदा है या नहीं। आप अपने मम्मी को भी बोल सकते हैं ये बात, उनको पता मतलब है मैं आप इंग्लिश एग्जांपल क्लास दे रहा कर। हूँ सर आपको। या हाँ तो ये मैं तो बता मैं रहा ये हूँ, ये चीज जरूरी नहीं है कोई भी किसी भी वजह से जाने, कोई भी और किसी वजह से भी जाने। किसी ओके, वजह से भी ये जाना जरूरी जी। नहीं कि हाँ किसी भी वजह से वो जाने उस चीज को। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ ना। And he even used the right मैं sentence, सर sir. For इसलिए एग्जांपल दिया ना, ताकि आपको ये समझ में then आए it कि मुझे ये I समझ am में आ going रहा है to कि the वो class. बंदा जान रहा है उस जगह के बारे में, इसलिए मैं उसी स्टूडेंट के बारे में बोला। बहुत सारे एग्जांपल्स में देता हूँ आप लोग को। वेर इज द बुक, वेर इज द बुक, विच बुक, द बुक आई गेव यू यस्टरडे, वेर इज द बुक। आपके बैग में मैं देख रहा हूँ। ओके, वेर इज द बुक, विच बुक, द बुक आई गेव यू यस्टरडे। ओके फाइन, सो प्लीज क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। तो पता है आपको कौन सी विंडो, दुनिया की इतनी सारी विंडो कोई नहीं, आपको पता चल जाएगा कौन सी विंडो, अंदाजा लग जाएगा। क्लोज द विंडो। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे विच वन, दिस वन और दैट वन। Yes. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। दुनिया में इतनी सारी विंडोज हैं, कोई अपने लिए कौन सी विंडो भाई कौन सी विंडो, ऐसा नहीं हो गया राइट। अगर मैं कहूँ क्लोज ए विंडो तो कोई भी विंडो आप क्लोज कर सकते हो। Yes. डजंट मैटर, आप घर जाकर अपने घर के विंडो क्लोज करके आ जाओ, बोलो आई क्लोज्ड ए विंडो, आई क्लोज्ड ए विंडो, नो प्रॉब्लम्स। इफ आई से टू यू हे क्लोज ए विंडो, ओके क्लोज ए विंडो, तो आप अपने घर जाके भी बंद करके आ जा सकते हो, बोले सर आई क्लोज्ड विंडो। I will turn off my computer and I will say I closed the window. And laptop has Yeah. also window. Yeah, exactly. So कोई बात नहीं, अगर जितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है अभी फिलहाल बस इतनी है कि जिस चीज यहाँ जब हम लोग वर्ड बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स दोनों चीजें हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन्स हियर। ओके, डिड यू लाइक द फिल्म, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, अभी फैजान बताएंगे। डिड यू लाइक द फिल्म, फैजान डिड यू लाइक द जी सर। फिल्म, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, अंदाजा दे दीजिए। एक कोई जरूरी नहीं कि जो आप बोले वही एकमात्र जगह हो, लेकिन एक आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है, एक कौन बोल दोस्त रहा है, किससे दूसरे बोल रहा है, दोस्त से पूछ रहा हो। क्या कॉन्टेक्स्ट है। पूरा अ, जवाब देते तो मैं खुश हो जाता, आपने बहुत अधूरा जवाब दिया है, इट्स नॉट इनफ। आप, मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे पूछूं डिड यू लाइक द फिल्म, अच्छा लगा आपको। सर कोई दोस्त फिल्म देख करके आया हो और दूसरे दोस्त पूछ रहा हो कि तुम जो फिल्म फिल्म देखने गए थे वो तुमको पसंद आया। ना अच्छे से बोला आपने, तुम जो फिल्म जो देखने गए थे, स्पेसिफिक फिल्म हो गई ना, इसीलिए आप बोलेंगे डिड यू like लाइक द film. फिल्म। यस, डिड यू लाइक द फिल्म। That particular that yes, to particularize that thing, okay, because common noun तो Film I सारे ग्रुप suggest के you. लिए होता है, लेकिन उसमें से किसी एक को ये पर्टिकुलराइज करने के उसमें द लगा देते हैं। ओके, और सर मेरा मेरा एक दूसरा सजेशन और होगा, रिवीजन ऑफ द होल लेसन, क्योंकि जहां तक हम लोग शुरू किए तो वहां से ये सब बात नहीं हुई थी, वहां और बेसिक बातें भी हुई थी। ओके, सो इट्स अ गुड आइडिया टू रिवाइज द लेसन नाउ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था ना सर लास्ट में कि ये जो पेरिस है, लंदन है, इसमें द नहीं लग रहा है, तो फिर सर द ताजमहल क्यों बोला जाता है? ये वो भी तो एक ही है, ये जैसे लंदन एक है। I will take you to the grammar reference page because I don't want to make you feel that you haven't studied this. I want to make you feel that you need to study harder. Okay, it's important.
Take a look. If you have studied something, then you won't have this question. Listen, where is this? Come here. 4.2. 4.2, definite article rules. Superlative adjectives. Only one of something. There is only one of something. The sun, the queen, the government. लेकिन आप बोलेंगे इसमें तो यहाँ पर सवाल उठना चाहिए कि लंदन भी तो एक है. But there is a problem. Okay, London is a city. We do not normally use the before cities. और एक बात और बता दूं, अगर आप ऐसा कोई भी सोच रहा है कि कोई भी आर्टिकल्स के रूल्स सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो नो, articles are random. Articles are random. If there are 100 rules, there are 200 exceptions. So what will you do? Nothing. So don't ask such questions कि अगर ये है तो वैसा काहे नहीं हो रहा. तुम जो गौर कर रहे हो वो होगा. क्या गौर किया अब तक? मुंबई बोलना है कि इन द मुंबई बोलना? Right. Mumbai. In Mumbai. Okay, I live in the match is being played मुंबई. तो जो आदत है आर्टिकल्स में आदत से बोलोगे, रूल्स नहीं हेल्प करने वाली हैं. जो दो रूल्स बताऊंगा वो सिर्फ इतना कि द पर्टिकुलराइज कर देता है और ए और एम जनरलाइज कर देता. बाकी सारे रूल्स के एक्सेप्शंस आएंगे. अगर मैं बोलूं कि शहरों के नाम के पहले द नहीं लगाते तो बोलो द पंजाब. अच्छा, शहर का नाम नहीं है लेकिन स्टेट का नाम है, द पंजाब बोलते हैं, द पंजाब. द बिहार नहीं बोलेंगे. तो तुम्हें क्या करना होगा? आदत डालनी होगी रैंडम यूसेस की. बहुत अजीब अजीब रहेंगे रूल आर्टिकल्स के. अगर 100 रूल तो 200 एक्सेप्शन. तो इसलिए कोई फायदा नहीं है रूल्स रखने का. आप महसूस करिए, जहां जहां जो चीज आप देखते हैं उससे अंदाजा लगाइए क्या देखते हैं, और जहां कंफ्यूजन है वहां एग्जैक्टली पूछिए. तो आप लोग अब तक क्या किए हैं इसके साथ बता दीजिए मुझे. क्या कहते हैं शहरों के नाम के पहले अब तक यूज किया है आर्टिकल्स? यस और नो? फैजान, No, sir. have you used articles before cities so far? No. Then you will not start using them. क्योंकि रूल्स बदल नहीं रहे हैं. कुछ नया पढ़ने का मतलब नहीं कि अब तक जो पढ़े उसको गलत कर दें, भुला दें. ओके? Yes. So we will not use the before names of cities. ये देर क्यों लगती है? आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर कोई चीज पढ़े तो पीछे का सब गलत करके आपको हमको फिर से सही करना होगा? तो फिर पढ़ाया जाता वो आपको इतना इंपॉर्टेंट होता. तो अगर आपसे कोई पूछता वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू कम फ्रॉम, यूनिट 1 एलिमेंट्री, यूनिट 1, आई कम फ्रॉम मैनचेस्टर और आई कम फ्रॉम शिकागो, राइट? कोई द नहीं होता ना वहां पे. ये आदमी के दिमाग में मैसेज चला जाता है कि हम शहर के नाम ऐसे ही बोलते हैं. फिर कोई बोलता है आई एम फ्रॉम मुंबई, फिर कोई बोलता है आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो फिर कहाँ आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि आज हम लोग पढ़े, तुम पूरा प्रैक्टिस अपना अंडू कर दें. ये तो समझदारी वाली सोच नहीं है. Is it cold enough, Jordan? Harry Ramsden opened a fish and chip shop in London. Fish and chips are now popular in. Fish and chips are now popular in. Paris. Now they are popular in Paris. One last statement about articles. The correction in articles will reflect your overall understanding of English. Correction in articles will reflect your overall understanding of English. If somebody has good understanding of English, they make less mistakes of articles. Okay? And if somebody has average understanding of English, they make more mistakes of articles. So you don't work on articles. You work on your English. Your articles mistakes will take care of themselves with time. Is that clear? Yes, sir. So all those people who are worried about articles mistakes, my suggestion to you is don't worry. Just take care of your English. Study English the way you're learning. And slowly you will observe again. Rules will not help you, okay? Because there are only 5-6 rules that you see in the grammar reference book, grammar reference page. There are teachers who dictate 150 rules.
and their students are all at, C when they have questions related to articles. Means they do not know what they should do. They feel so confused about the correct answer. तो होता है कंफ्यूजन आएगा क्योंकि आर्टिकल्स हमारे लैंग्वेज में है ही नहीं, एलियन आइडिया है, इसीलिए. ओके Faizan, try not to feel depressed about it. Okay, if you are not very sure about articles, it doesn't matter because you are revising your elementary course, and I can tell you, articles are related to every small thing. अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो सेंटेंसेस दूंगा जहां आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको लगता है आर्टिकल से वो आप सही कर लोगे? नहीं, आपकी सेंस ऑफ लैंग्वेज होगी. देखो, कोई बोलता है हम फिल्म नहीं देखते हैं, अरे कोई बोलता है हम फिल्म देख रहे हैं. ठीक है, बोलिए इंग्लिश में कैसे बोले? I don't watch film, I'm watching the Apple. फिर से ट्राई करें. हम फिल्म I नहीं don't देखते watch. हैं. I don't watch film. इसीलिए मैंने And कहा है कि I हम बहुत काम करना है. ठीक, आई डोंट वॉच फिल्म्स, आई डोंट वॉच फिल्म्स Films. एंड वॉचिंग ए फिल्म. देखा आर्टिकल आया ना, I'm watching it. चेंज. watching a film. तो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है अपनी इंग्लिश की. आर्टिकल्स उसका हिस्सा है. आप आर्टिकल्स इंप्रूव नहीं करते, ठीक है, प्रीपोजिशन इंप्रूव नहीं करते. सो डू नॉट अलाउ दीज थॉट्स टू बॉदर यू, Yes. प्लीज. Moving on. Page number 28 was the homework too? No. Yep. Okay. Vocabulary. A piece of cake. Now, we have already done these things in the main book. Let's do it. Number 1. A piece or slice of cake. 2. A loaf of ham. A loaf of ham. Or loaf of ham. Ham. 3. Bottle or A can Or of bottle of beer. beer. Can or bottle of beer. a bunch of bananas. A bunch of bananas. 5. I use a piece of banana, so A bunch of bananas. Say a piece or slice of bananas, then you have chopped the banana, then you are referring to that part. okay. If I will take, then it will be a banana, Yes. not a piece of banana. No, a banana. Fine, fine. Okay. Yeah. Number 5. A packet of crisps. Packet of crisps. Very good. 6. A bottle of olive oil. A bottle of or a olive can oil. of olive oil. Or a can of And- olive oil if A Can can available. of an olive oil. Yes. 7. 7. A Packet a- of paper, piece of paper, A piece of A paper. bunch. A piece of paper. A piece of Paper. paper. Okay. Yeah, a piece of paper, a bunch of paper is possible, but no, a bunch of papers, you will have to say, a bunch of papers, Papers. and that will be, okay, that's a different. Packet of paper is not possible, so. Packet of paper is absolutely correct. Paper means kagaz. Yes. Paper means kagaz is a thing, material. So paper is uncountable. But when paper means documents, when paper means newspaper, the word becomes countable. So when I say, I looked at the papers, I looked at the Paper. what does it mean? Documents or. I checked the documents. Okay, yes. And yeah, I was asking, he told a packet of paper. So Hmm. the packet of paper or a packet of papers? Again, papers doesn't mean anything like kagaz. Papers means, I told you documents Document. or newspaper. When you are talking about kagaz, Hmm. paper is uncountable. Okay, fine. Okay? Yeah. जो आप पन्ना A बोलते हैं ना, packet, there only one document is there, right? 2 packets, 1 packet. I don't think packet comes, packet here is a quantity word. Do you guys understand that word, packet, piece, all these words are quantity words. You are referring to the quantity. Yes. Documents की quantity बोलेंगे? A bunch of papers. मतलब कुछ documents. हाँ. A bunch of, मतलब Good document. कुछ documents. He had a bunch of papers in his bag and nothing else. Mhm. No money. Mhm. मतलब क्या क्या था उसके बैग में?
कुछ documents थे, okay? And when you are saying about a packet of papers, I'm not saying a packet of papers, I'm saying a packet of paper. okay. But not actually Two packets of paper. packet of paper. It is a packet of paper. Paper, कागज है, एक पैकेट कागज. Okay. It is not a packet of papers. It is a packet of paper. Two packets of paper. Two packets of paper. That's what I'm asking. Is it correct? Is it This is a sheet of paper. This is a Sheet of paper. sheet of paper. I corrected. I was thinking this is a paper. That's why This this is not a paper. Yeah. This is a a this sheet is of paper or a This is piece of paper. Uncountable material now. Yes, sir. This is a sheet of paper. This is a piece of paper. Yes, sir. Hmm. All right. Rather deep confusions you guys have, huh? Because they told us very logical things, not a logical thing, very interesting thing. Like if we use the word paper, it means document or something. Yes, newspaper. Yes, sir. Did you read the paper? Can I have it back? Did you? Read the paper. Can I have it back? Okay, now. Number 6, number 7, number 8. So paper means कागज, पहले दिमाग में लाइए. Material. Material noun. Yes. Paper is कागज, material noun. It cannot be plural. Okay. When paper means documents, I've signed the papers for you. Have Find the paper. means I've signed the documents for you. Yes, sir. And always I was thinking about the documents. That's why I was thinking papers, packet of papers. But yeah, fine it is. There is no packet of paper. Because it is uncountable. There can be a file of papers. Yes, yes. There yes. can be a File of papers. file of papers. Yes. Where is that brown file of papers? Yeah. कहाँ है वो Some- brown file? Classified documents are there, sir. They're the packet of papers, right? No. So much confusion. When you become rigid with something, then it becomes difficult for me to convince you guys. Why would you call it a packet? फिर से बताता हूँ, ये सब क्या है? यहाँ जो लिखा है स्लाइस, पैकेट, कैन, बंच, ये सब क्या है? Quantifying the. ये सब क्वांटिटी बताने के लिए है, राइट? Yes. अमाउंट बताने के लिए है. तो आप अमाउंट बताने के लिए कर रहे हैं, आप उसका कंटेनर बताने के लिए बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंटेनर बताने के लिए बोलना है. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड समथिंग. आज मैंने एक और चीज बताई है लोगों को. आपको पर्पस समझना होगा. ये सारे वर्ड्स पीस, बॉक्स, बॉटल, लोग क्या बताते हैं? Quantity. क्वांटिटी. अच्छा, आप बोलिएगा मेरा डॉक्यूमेंट्स का बैग कहाँ है? तो बैग उसका क्वांटिटी है कि कंटेनर है? Container. तो आप कोई पैकेट में रख दिए, पैकेट को कंटेनर बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, क्वांटिटी मत यूज करिए. तो यहाँ हम क्वांटिटी बता रहे हैं ना, Yes, sir. तो क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं आप बोल दीजिए रूम ऑफ पेपर्स. आई डोंट केयर, आप पूरे रूम में डॉक्यूमेंट्स रखते हो, आई डोंट केयर. Yes. बट दैट इज नॉट क्वांटिटी, दैट इज अ कंटेनर. प्लीज अंडरस्टैंड. तो आप आजाद हैं कोई भी कंटेनर में कुछ भी रखने के लिए. Yes, sir. वेयर इज द केटल ऑफ मनी? वेयर इज द केटल ऑफ मनी? मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा आपका इंग्लिश. वेयर इज द केटल ऑफ Kettle of मनी? money. आप पैसा केटल में रखते हो भैया. Yes. तो इसके मतलब ये नहीं कि कोई फ्रेज बनेगा सिखाने की चीज, वो आप यूज कर रहे हो इस तरह से, आप करिए, आपके केस में वो सही है. तो ऐसे ही आप पैकेट ऑफ पेपर्स बोले जा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल केस में सही हो सकते हैं. हाँ, आपने but सारे normalize. डॉक्यूमेंट्स कहाँ रख दिए हैं? किसी पैकेट में रख दिए. Yes. तो आप वहां सही हो सकते हैं, लेकिन उसको एक फ्रेज नहीं बनाया जा सकता है ना, कि वो एक जनरल फ्रेज बना जिसको सिखाया जाए इंग्लिश में. वो आप, जैसे मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बैग लेके, मुझे पैसे जमा करने भाई, कहाँ? बैंक में. मुझे बहुत डर है कि पैसा मेरा लुटा जाएगा. तो मैंने क्या किया ना, एक दिन पैसे को कहाँ रख दिया? केटल में रख लिया. जो चाय वाली केतली होती है ना, उसमें डाल दिए पैकेट्स, बंडल्स ऑफ नोट्स, और उसको लेकर के ऐसे चलने लगा. ठीक है. तो मेरे भाई को भी पता था, हम दोनों साथ जा रहे हैं. तो बाद में मेरा भाई देखा वो केटल नहीं. वेयर इज द केटल ऑफ नोट्स? एक केटल ऐसे ही खाली रखा. तो पूछा वेयर इज द केटल ऑफ करेंसी नोट्स? इसका मतलब ये कोई चीज पढ़ाने वाली बन गई क्लास में. क्या बात करने लगे आप लोग? तो आप स्पेसिफिक केस बना रहे हो एक, कि आप पैकेट में रख दिए हैं पेपर को. रखिए ना सर, वो बैग कंटेनर बना. वो यहाँ ये सारे वर्ड्स क्या है? क्वांटिटी बताने के लिए. तो मैंने कहा फाइल ऑफ पेपर्स. ए फाइल ऑफ पेपर. चलिए समझ में आता है, ये कॉमन चीज है.
लेकिन कोई पैकेट में पेपर रखेगा तो फिर जबरदस्ती है, रख सकता है भाई, उसको बोल सकता है वेयर इज माई पैकेट ऑफ पेपर्स, वेयर इज माई, अब जिसके बाद जिसको पता है उसके बारे में बता सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कोई बढ़ाने की चीज नहीं बनेगी, वो आपको समझना हो कि आपने दोनों को साथ में जबरदस्ती रखा है किसी वजह से। कर सकते हैं आप 100%। जैसे मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, केटल ऑफ नोट्स कर सकता हूँ कि नहीं। मेरे पास ढेर सारे डायमंड्स हैं, ठीक है, मैंने उनको एक सॉक्स में डाल दिया या केटल में डाल दिया, तो केटल ऑफ डायमंड्स हो गया कि नहीं, वो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कोई पूछेगा मेरे से वेयर इज द केटल ऑफ डायमंड्स, उस जिसको पता है, जिसको पता है, हाँ, अनलेस अनलेस ही नोस ऑफ कोर्स, वो बोल पूछेगा ना। क्या ये पढ़ाई जाने की चीज बनेगी? ये सब कोलोकेशंस है मेरे दोस्तों जो आप सीख रहे हैं। क्या है कि भाई ये कॉमन कोलोकेशन से अक्सर बोले जाते हैं, तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, ए पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, ए पैकेट ऑफ पेपर, अंडरस्टैंड? पेपर मीन्स कागज, मटेरियल नाउन, material noun. That's why uncountable. That's why material nouns are always right. Number 8. okay. One more thing, Yes, go ahead. it is material or material? Material. Material, okay, fine. Yeah, a can of coke or a bottle of coke. जब आपने कन्वर्सेशन ये प्रोनाउंसिएशन की तरफ घुमाया, तो मैं बता दूं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होती है। जैसे मैं मटेरियल बोल रहा हूँ ना, तो वहां पे एक इतना कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन। स्पेलिंग कैसे लिखते हो आप? MATERIAL, तो मटेरियल, मटेरियल, व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा आप बताएं, आप FEAR को कैसे पढ़ते हैं? FEAR पढ़ते हैं ना। अब आप सोचिए कि वो आवाज फॉर के बाद वाली आवाज जो है फियर, ओके, ईयर, ओके, वो अगर यहाँ आ जाए तो कैसा लगेगा? ट के बाद वो आवाज है मटीरियल, मटीरियल भी नहीं, मटीरियल। मैं आपको डिक्शनरी में दिखाता हूँ कितना ये कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन है इसका। मटीरियल, I'll show you. तो गौर से सुना जाए, है ना। बाकी MATERIAL। Can you please share the देखिए। screen also, sir? Share the screen also. Okay, all right. Why is this? It's a little slow. Okay. Now, okay, everybody. देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपको, फियर में कैसे बोलते हैं? फियर बोलते हैं ना। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट मी गो टू द डिक्शनरी। जितना कोई गहरे जाएगा उसको उतना इनसिक्योरिटी आता है। मैं बहुत इनसिक्योर हूँ अपने, मतलब अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, मतलब अपने प्लेस के लिए नहीं, पोजीशन के लिए नहीं, अपने नॉलेज के लिए। मुझे लगता है मुझे बहुत सीखना है। क्यों आता है ये ऐसा फीलिंग? आपको पहले यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फियर, और यहाँ इसकी आवाज देखिएगा, फियर के बाद ईयर, राइट। अब आपको दूसरी विंडो में खोल के दिखाता हूँ, मटीरियल, देखना वही सेम आवाज वहां पे लिखी होगी। इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ वो आप अभी नहीं बोल पा रहे। Material. देखो यहाँ क्या के बाद सेम टू सेम वही सिंबल्स हैं। यहाँ देखो, देखो यहाँ सेलेक्ट कर रखा मैंने, और यहाँ देखना है वही सेम सिंबल। यानी जो आवाज आप फियर में निकालते हो और टी के बाद निकालना है, मटीरियल निकालना है, मटीरियल नहीं निकालना है। तो के बाद तुरंत ई और रा नहीं बोलना है, मटीरियल, ईयर बोलना होता है, मटीरियल बोलना होता है, ईयर बोलना पड़ता है आपको। So it's not going to be an easy thing for anybody here because आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कैसे बोलना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं? तो इसी वजह से टी के बाद अ बोलना पड़ेगा आपको, मटीरियल, टी के बाद अ लाना होगा हल्का सा, क्योंकि फियर में खाली फी बोलते हैं कि फियर बोलते हैं, अब ही बोलते हैं, तो वैसे मटीरियल बोलना पड़ेगा, मटीरियल, या अ लाना पड़ेगा। अ बोल रहा हूँ का मटीरियल, मटीरियल। ऑलराइट, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर डाइजेस्ट करना चाहेंगे तो इतना कुछ है जानने के लिए इस क्लास में। यू कैन लर्न प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, सो मेनी थिंग्स।
but it's up to you how many things you are ready to digest. अगर आज के बाद फिर से आप material बोलते हैं तो what can I do? I have spent 5 minutes to tell you, to help you, showed you. Why did I first talk about fear? मैंने fear की बात क्यों की? ताकि आपको आसानी से समझा सकूं कि सेम आवाज वहां डालना है. Yes. वो सिंबल सेम है, आवाज सेम है. fear, ear, तो material, okay, लाना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है, material. Okay. A can of Coke, a bottle of Coke. Sir, what does loaf mean? We have talked about it. Loaf. Everybody? Yes. A loaf is, I will show you the photo. And when you do not attend the class, I would expect you to watch the recording. Okay, sir. This is a loaf. This is a, No. now loaves can be sliced into Peace. slices, can be cut into slices. Loaf can be cut into, Slices. so this is a loaf of bread or loaf of ham. What is this? Seems like loaf of bread. This looks like loaf of bread, but you can here see the loaf has been sliced. Yes. So it can be meat as well. Then it will be called a loaf of pork, loaf of ham, like that. Okay, not ham, loaf of pork, loaf of what is this here? Do we have that loaf of ham? A loaf of ham. Okay. Next, number 9. A bunch of grapes. Number 10. Packet of chocolate. A packet of chocolates. 11. A Box of chocolates as well. Number 11. piece of chocolate. A packet of chewing gum. 12. Sir. Yes. A piece of chocolate. A piece of chocolate. Yes, absolutely correct. Okay. No problems at all. I really like this attitude of Nikhil. You know, he doesn't let me feel कि मेरे से कुछ गलती हुई है. You know, मतलब कई बार क्या होता है कि टीचर अगर थोड़ा इमोशनल हो जाए ना बात करने में, हो जाता है. जैसे मैं थक गया अगर बात करते करते कोई बात बताते बताते या इमोशनल होकर शाउट कर गया थोड़ा, तो स्टूडेंट बैक ऑफ कर जाते हैं, तो मुझे गिल्ट आने लगता है. लेकिन जब आप फिर भी अपने आप को बनाए रखते हैं ना अपनी जगह पे, तो मुझे लगता है थैंक यू वेरी मच. बात समझो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ. मैं बताता हूँ, कई बार जब टीचर पढ़ा रहे कोई चीज बता रहे, तो कभी इमोशनल इंसान है हम लोग सब, तो समटाइम्स इमोशंस गेट द बेटर ऑफ अस एंड वी समटाइम्स शाउट, वी समटाइम्स से थिंग्स अ लिटिल बिट विद अ लिटिल बिट ऑफ इरिटेशन और समथिंग. ठीक है, तो ऐसे मोमेंट पे अगर स्टूडेंट्स बैक ऑफ कर जाएं, तो टीचर, मेरे जैसे टीचर गिल्ट में आ जाते हैं कि मैंने गलती कर दी थी, स्टूडेंट पूछ नहीं रहा. क्योंकि मैं तो चाहता हूं उनको एनकरेज करना. हाँ, तो पूछना है उनको. तो जब स्टूडेंट पीछे चला जाता है ना कि नहीं पूछना, सर चिड़चिड़ा गए है, तो मुझे गिल्ट आने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने रिएक्शन अपना कंट्रोल क्यों नहीं किया. लेकिन अगर कोई फिर अपना सवाल रख दे सामने हल्के से मुस्कुरा के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इससे ये पता चलता है कि वो मेरे को गिल्ट नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं आपसे नहीं पूछेंगे, आप चिड़चिड़ा गए, ऐसा नहीं लगता. ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद थोड़ा सा इमोशनल हो गया था आज बात करते समय. ऐसा लगा आप लोगों को? चलिए बढ़िया है. बट आई फेल्ट दैट आई कुड हैव हैंडल अ लिटिल बेटर बिकॉज़. लेकिन मुझे लगा था, पता है कब सर, हाँ. जब आप इसको द लंदन पे बोल रहे थे, वो तो मजाक चल रहा था, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा था. क्योंकि मुझे लगा कि आप इतना क्यों बोल रहे हैं, इसको हो गया वो तो मिस्टेक. मजाक, उसका तो बंधा हुआ है, उसका तो बंधा हुआ है, उसका कहानी अलग है. उसका कहानी अलग है. वो लड़का अलग है, वो मतलब उस स्पेशल केस है वो. उसकी कहानी अलग है. हम किसी को वैसे नहीं ट्रीट करेंगे जैसे उसको करेंगे, याद रखिएगा. ठीक है, हाँ, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा हमेशा. इसीलिए मैंने आपको बोला कि हो गया सर, छोड़िए. नहीं, A piece of chocolate. A piece of chocolates. यहाँ चॉकलेट्स लिखा है, तो पीस ऑफ चॉकलेट हो सकता है, लेकिन पीस ऑफ चॉकलेट्स नहीं होता. हाँ, चॉकलेट हो सकता है, चॉकलेट नहीं हो सकता. ठीक है, पीस ऑफ चॉकलेट इज पॉसिबल. ओके, बट चॉकलेट्स नहीं. ओके, नहीं. हाँ, ए पैकेट ऑफ चॉकलेट्स. So if chocolate is a material, हाँ, then sir, chocolates and chocolate, there is no difference. some nouns are both, Adnan. Yes, Like ice cream is a material, yes sir, so ice cream is uncountable. yes sir. But then in certain context, ice cream is countable. मैं फिर आऊंगा कि क्या मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाया मेरे दोस्त, ये देखे जरा फोटोज के साथ. ए बताइए, मैं एक आपको क्या कहूं. देखिए यहाँ पे
यहाँ देखिए दोनों चीजें बताई मैंने, काउंटेबल अनकाउंटेबल करके। अब आप मुझे आज फिर पूछ रहे हैं ये चीज यूनिट 4 में, अब बताएं मैं आपको क्या कहूँ। लापरवाह स्टूडेंट, Would you like a chocolate? And There the- are different, sir, but if we talk about like, I understood the point, but sir, if we see it as a material thing, then sir, chocolate and chocolate both means the same. Chocolate and chocolate. अगर मैं उछल के गर्दन पकड़ने वाला चुड़ैल होता Yes. तो अब तक कर चुका होता। ठीक है, कितना बकवास बात बोलते हैं आप। मैंने कहा जब कोई चीज ये मटेरियल है तो उसका प्लूरल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ हम लोग चॉकलेट मटेरियल की बात कर रहे हैं, आई लाइक चॉकलेट। Okay. आप ओके बोलते जरूर, लेकिन आप 2 मिनट बाद ध्यान से निकाल देते हो बातों को, No, sir, मेहनत not नहीं really, करते हो। sir. नहीं, आप ये एक्सरसाइज किया मैंने, आई लाइक चॉकलेट, चॉकलेट द मटेरियल, आई लाइक The material. chocolate. I like yogurt, the material. Okay, I like milk, the material. I like ice cream, the material. लेकिन यहाँ would you like a chocolate, the material के बारे में नहीं बात हो रही है, कॉमन नाउन की बात हो रही है। would you like a chocolate, और ऑप्शंस देखो सामने, पिक्चर्स दिखा के कि देखिए कैसे एक नाउन कलेक्ट मटेरियल मटेरियल से कॉमन कैसे कॉमन नाउन भी है। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दिस। यहाँ देखिए ये कॉफी जो है, कॉफी अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, यहाँ कॉफी, एक कप कॉफी, ये बताने के लिए एक कॉफी बोला गया है, ये नहीं कि कॉफी यहाँ मटेरियल नाउन नहीं है। एक कप कॉफी बोलने के लिए कैन आई हैव ए कॉफी बोला जा रहा है, कैन आई हैव ए कॉफी। यहाँ ए कॉफी मतलब कोई कॉमन नाउन वगैरह नहीं, ए कप ऑफ कॉफी, इसको बस कह सकते हैं एक्सेप्शन केस है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड यू लाइक ए चॉकलेट। आइसक्रीम की बात करते हैं, आप क्या बोलेंगे, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक ए आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम्स, I like ice cream. विच वन, ओनली आइसक्रीम, क्यों? Because I saw the context clearly. You like ice cream because you're talking about ice cream, the thing, material. So I like ice cream. अब आप दुकान में जाए, दो दोस्त, तो आप क्या बोलेंगे, give me 2 ice creams, give me 2 ice creams. मम्मी आपकी निकाल के लेके बैठी हुई है पूरा का पूरा ये, और स्पून, ओके, स्कूप जिसको कहते हैं, स्कूप। तो अब आप क्या बोलेंगे, मम्मी आई वांट सम आइसक्रीम, आई वांट ए आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, क्या बोलेंगे मम्मी को, क्योंकि अब आप मटेरियल मांग रहे हैं वहां से। तो बी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि देखो दो बातें हैं, एज एन अडल्ट पहले तो 90% लोग कोशिश कर करके हार जाते हैं, कभी क्लियर नहीं होता उनका कॉन्सेप्ट, और जो बचपन से सीखे हैं ना, उनको ये सब कंफ्यूजन आता ही नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कुछ भी, उनको इंटरेस्ट है सिर्फ इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश समझने में। आप मुझे बताओ, आपने हिंदी के कितने ग्रामर टेस्ट दिए? तो जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, उनको इंग्लिश का ग्रामर टेस्ट नहीं देना होता है, और जो टेस्ट ग्रामर के नाम पे लिया जाता है वो नॉलेज से सॉल्व कर सकता है। और जो कुछ चीजें आपसे भी पूछी गई थी स्कूल में जब आप थे, अब पूछा गया प्रत्यय समास क्या होता है बताइए, अव्ययभावी समास क्या होता है। अब किसी को बता दे कोई, हमको अभी यहाँ बैठा हुआ कोई भी, लेकिन स्कूल में आप लोग पढ़े ना, क्या इससे आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ रहा है? बहुव्रीहि समास क्या होता है, कोई बता? समास ही याद नहीं है तो राइट, पॉइंट समझ रहा ना, पॉइंट समझ रहे ना। तो वैसे ही सारे लोगों को इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजों को भी, लेकिन वो स्कूल तक से मतलब है, उसके बाद प्रैक्टिकली कितना अच्छा है इंग्लिश वो करेक्ट यूज कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। और बचपन में आदत पड़ गई सही चीज की, मतलब नहीं है कोई, इसीलिए कोई अंग्रेज उठ पुट के टीचर नहीं बनता। दे नीड ए थरो कोर्स, TOEFL course which costs more than 2 lakh rupees, course fee, and it takes maybe 6 months, 8 months for those Englishmen to do the course. What do they study? These things, that how they will convey certain ideas, grammar ideas to students. My point is कि जो अगर स्ट्रगल हो रहा है तो अब पर भी अपने आप को लकी मानो। मैं क्यों बोल रहा हूं अपने आप को लकी मानने के लिए, कि जिस जगह पे तुम हो एज एन एडल्ट, ये चीज तुम्हें समझ में आने के चांसेस 10% है, क्योंकि 90% लोग जिंदगी भर कोशिश करते नहीं समझते। एडल्ट होने के बाद ये सब चीजें बड़ी मुश्किल है समझना, जब तक कोई इस तरह का आदमी बैठा ना हो जो एकदम डेडिकेट कर दिया, भैया जितना देर लगेगा बताना है मुझे, कोई प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कब खत्म करना है कोर्स। अगर ऐसा आए तो फिर मैं कभी एंटरटेन कर सकूंगा आपके सारे क्वेश्चंस। अगर मेरे पर वो प्रेशर हो बाय द वे पीछे से
You have to finish this course within this You much will time. directly say that this be already read. Discussed, Yeah. watch the recording. That's Hmm. all. Right? But if I am ready to do this, because again, I know कि जब हो जाता है ना clear, तो क्या feeling आती है, बहुत अच्छी सी feeling आती है कोई चीज concept clear होने के बाद, जो confused रहते हैं जिस चीज पे हम. I want to be the reason for that kind of pleasure, happiness in your mind, you know, that kind of joy. That's it. तो आप move on कर लेते हैं इससे. I like ice cream. I like an ice cream. I like Ice cream. I like ice cream. I like biscuit. I like biscuits. I like a biscuit. I like biscuit. I like biscuit. I like a biscuit. I like biscuits. I like biscuit. तीन options. Biscuit, a biscuit, biscuits. Option A biscuit. Option B a biscuit. Option C biscuits. Option is Which option? I like. चलिए बाकी लोग जवाब दीजिए. सारे लोग जवाब दीजिए. I like biscuit. Option A. Option B a biscuit. Option C biscuits. Option D दे देता हूं the biscuit. Option E दे देता हूं the biscuits. option is I will. नहीं तीन ही तक रहने दो यार. Option A biscuit. Option B a biscuit. Option C biscuits. I like. I like Option A, B, C. biscuit. I A like B C. A. I like आप बताएं. biscuits. A. As per ice cream, A. Okay. आप बताएं. A. Option A. आप बताएं. Option A. बाकी लोग बताएं. मुकर्रम. I like Option A B. biscuits. फैजान कह रहे हैं C. मुकर्रम. साहिल. इमराना. Shahid, please, everybody, answer. I like biscuit A biscuit B, C biscuits. See, sir. And you told about ice cream, that's why I told A, sir. नहीं, Otherwise, उससे I told connection नहीं है. C. biscuit is countable. हाँ, आइसक्रीम अनकाउंटेबल है, बिस्किट काउंटेबल है. इसलिए Countable ऑप्शन सी सही है. Okay, C. No, I thought that it is- Sir, क्यों जरूर? एक्चुअली में दोनों होगा. सर जब बिस्किट क्या बोलेंगे तो आई लाइक बिस्किट भी बोल सकते हैं. आई लाइक अ बिस्किट एंड आई लाइक बिस्किट्स भी बोल सकते हैं. कहाँ से सिखाई है? अभी तो आप बताए ना सर. अच्छा, Sir, what means, sir? कैसे कब बता दिया मैंने ये? फैजान सब कुछ मेरे पे डाल देता. अभी तो आप बताए. आप गलत समझे नहीं बोलता है. बोलते आप बताए. चलो बता मैंने क्या बताया. तुम भी बता मैंने क्या बताया भाई. सर अगर वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है और अगर मैं किसी से सिर्फ मान लीजिए वो 3-4 बिस्किट्स हाथ में लिए हुए हैं और मैं उसको बोल सकता हूँ कि आई लाइक अ बिस्किट. मैं कह सकता हूँ कि मेरे क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान लगाइए फैजान. जिस तरह सभी आप कर रहे ना, काश आपने लंबे समय तक किया होता. दोस्तों वो जो बात बोल रहे हैं एकदम बेबुनियाद बात है, बेतुकी बात है. जब किसी के हाथ में 3-4 बिस्किट है तो आप उससे मांगते हैं, ये नहीं बोलते आई लाइक. आप क्या करते हैं? आप मांगते हैं उससे. मांगने तो के लिए आप सर बोल सिर्फ सकते एक हैं. ही ऑप्शन होगा फिर. यस सर, यू आर राइट सर. देन सर सिर्फ एक ही होगा, आई लाइक बिस्किट्स. Exactly. Option C. Okay. Because biscuit is a countable and ice cream is uncountable. यही बात अगर आपको मैं फिर से बोलूं, बोलना चाहते हैं आप मैं गाजर, मुझे गाजर बहुत अच्छा लगता है, तो आप कैसे बोलेंगे? I like carrots. Carrots. हाँ, Like और आप carrots. बोलना चाहते हैं मुझे पालक बहुत पसंद है, आप कैसे बोलेंगे? पालक. I पालक like मुझे बहुत पसंद spinach. I like है. आई लाइक. spinach. अनकाउंटेबल है तो स्पिनिच पे रुक जाएंगे, और कैरेट काउंटेबल है तो कैरेट्स तक चले जाएंगे. इसीलिए आप बोलेंगे हमको आम बहुत अच्छा लगता है, कैसे बोलेंगे? I like mangoes. मैंगोज. और आप बोलेंगे हमको अमरूद अच्छा नहीं लगता, कैसे बोलेंगे? आई I डोंट don't लाइक like guavas. guavas. गुआवास. बोलेंगे राम को भी आम बहुत अच्छा लगता है, आप कैसे बोलेंगे? राम Ram also likes likes mangoes. Ram likes mangoes. राम आम खाता है, कैसे बोलेंगे? Ram eats mangoes. राम इट्स मैंगोज. ए मैंगो नहीं बोलना था जो बचपन से रटे हैं. अब पूरा एक यही ट्रांसलेशन में लिखाया ही गया. राम आम खाता है, राम ईट्स अ मैंगो. राम मैं इट्स सोचा था एक मैंगोज. लाइन क्यों लिखा हुआ है, एक क्यों लगा रहा हूँ. जब आप पूछेंगे अभी भी टीचर से, हाँ. जवाब सुनिए. मैंने बहुत झेला है, क्या बताऊं.
वो बोलेंगे एक टाइम में एगो खाता है ना। Yes, this is the answer I get. You cannot write like mangoes. मैंने कहा कि ग्रामर की माँ बहन जो करना होता है ये लोग कर देते हैं, एक टाइम में एक खाता है इसलिए ए लगाओ। There is a lot, different lot. Ram, it's a mango. जाहिल है वो, Yes. उनको माफ कर दिया जाए, ठीक है, उनको जाने दिया जाए, कोई There is spelling the wrong English. क्या कर सकते, यही तो सबसे बड़ा रोना है। और अगर आप उनको समझाने चाहें, एक लड़का जो खंदक पे टीचर है, ग्रामर पढ़ाता है, वंस ही जॉइंड क्लास, मैंने उसको ये 2 चीजें बताई थी कि इन बिहार शिप बोलना है, एट बिहार शिप नहीं बोलना है, ठीक है, और उसके बाद ये मैंगोस वाला, तो वो इतना सारा किताब लेके आया मेरे पास अगले दिन, बोला सर इस सारा किताब में आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा लिखा। मैंने कहा सब फाड़ के फेंक दो। बोला ऐसा क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा वो सब किताबें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के लिए और झारखंड के लिए लिखी गई हैं, यहाँ से पैसा कमाने के लिए। इसके लिखने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश के, इसके लिखने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं है, उनको डिग्री मिली हुई है, उन्होंने किताबें संकलित करते हैं, समझते हो ना? मतलब इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? नहीं, ये सारी तरफ से कलेक्ट करने वाले लोग क्या कहते हैं? अच्छा छोड़ दो, जान दो। तो वो लिखने के औकात नहीं रखते किताब, वो लिखने की उनकी क्षमता नहीं है, वो करते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत भी लिख देते हैं, जो कि उनके ग्रामर बुक से वेरीफाई नहीं की जा सकती। वो Acquired is the word. Acquired from different parts. Thank you. So, but no thanks. I was not looking for that word. Yes. Okay. So my point was, Ram eats a mango is not a sentence which means Ram आम खाता है। Yes, sir. ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं। अगर आपको जिंदगी में बातचीत में बतानी है कि फलाना दारू पीता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ही ड्रिंक्स वाइन, ओके, या ही ड्रिंक्स, ठीक है, वो दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क, ओके। और वैसे ही अगर वो बिस्किट खाता है तो आपको बोलना पड़ेगा ही ईट्स बिस्किट, बोलना पड़ेगा, ए बिस्किट नहीं खाता। आप ए बिस्किट बोलेंगे तो आगे कुछ लगाना होगा, ही ईट्स अ बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट, ही ईट्स अ बिस्किट फॉर लंच, लाइक दिस, देन द सेंटेंसेस। Can we do one thing? Okay, it's 7:32. Tomorrow you guys can discuss this with your with my friend Lisa coming from Wells. Okay, Okay. you can ask her. Again, Ram eats a mango can be the title of a book. कि राम एक आम खाता है, उसके बाद अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं, तो वो कहानी वहीं से शुरू, उसी का नाम रखा है, राम eats a mango and the world changes. Okay. And how she will understand our context if we say in Hindi? I'll be there. Don't worry. Okay. Don't worry. I'll be there. See you guys. Bye-bye. Take care. And study hard. Don't make me work on the same thing again and again. All right. You guys are making me work for the same thing again and again. Study hard. See ya. Bye.